Hello, my dear students. Welcome to Chalk, Chai and Zindagi. Today we will revise the beautiful poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. In this video, we will understand very important phrases, its explanation, the central theme, the message, and the poetic devices in a simple and easy to understand manner. So let's begin. Now we will count to 12 and we will all keep still. Still means we will not move and we will count till 12. Why he says now we will count to 12? Number 12, it represents the hours of the day and the month of the year. पूरे साल में 12 महीने होते हैं, right? And it also represents 12 hours of the day. Now through this the poet wishes that this silence, self-introspection and realization should continue for the whole year, forever, not just for short time. इंट्रोस्पेक्शन मतलब हम अपनी आत्मा से बात करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने कहाँ गलती की है, कहाँ हम सेल्फिश हुए, कहाँ हमने हेल्प की है, कहाँ हमने अच्छा काम किया है. दिस इज ऑल, और इसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन. जब हम अपने अंतर्मन से बात करते हैं, अंतर्मन से हम कभी झूठ नहीं बोल सकते. सो कहता है कि हमें 12 तक काउंट करना है. एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई द 12 नंबर इज गिवन. सो यू हैव टू राइट डाउन सेइंग दैट इट रिप्रेजेंट्स द आवर्स ऑफ द डे और द मंथ्स ऑफ द ईयर. बट थ्रू दिस द पोएट विशेस दैट this silence, this introspection and realization should be a continuous process for the whole year, not for the short time. Right? So keep still means again we should be motionless, we should not move for once on the face of the earth. Let us not speak in any language. He says, बोलना नहीं है, you silence, complete silence for once. This means let us maintain complete silence. Not speaking in any language means keeping quiet and doing self-introspection. Right? And this can only be achieved in the moment of total suspension of activities. हमें थोड़ा टाइम, जैसे हम कहते हैं ना, आप सारा दिन खेले, पढ़ाई किया, आपने मोबाइल देखा, लेकिन बिफोर स्लीपिंग इंट्रोस्पेक्शन जरूर करना चाहिए. गिव 5 minutes टू योर सेल्फ. सोचो कि हमें क्या करना है, कल के लिए फोकस्ड है कि नहीं, कैसे स्टडी करनी है, क्या हमारे एम्स हैं. दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन और कीपिंग क्वाइट. इट्स अ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, राइट, वेयर वी लीव ऑल द थिंग्स विच आर बॉदरिंग आवर माइंड एंड वी जस्ट कंसंट्रेट ऑन वन थिंग. दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन. नाउ ही सेज let us stop for 1 second. Right? By keeping quiet, the poet wants to say that all linguistic barriers will be eliminated and all the people will be united in silence. वैसे तो एक मत नहीं हो रहे हैं, डिफरेंट हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन जब हम साइलेंट हो जाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो उस समय वो हम सब we will be united. Let us stop for 1 second. Again he says, stop all the activities, even if it is for 1 second, and to give time for introspection and realization. You have to give time for introspection and realization. I hope you have understood this. Now take the screenshot of this and then we will move to next part of the poem. So I've already told you, he says, let us stop for a second and not move our arms so much. He says, pause. Stop for a second means pause your hectic activities. Right? And what will happen? It will make you aware of your actions and their impact. हम जो काम करते हैं, हमारे actions हैं, उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है. That realization will come if you will stop for a second.
Not move our arms so much means the constant physical movement which we do, our restless actions. By reducing unnecessary activities, we can achieve stillness and give our mind a chance to think and reflect. Okay? And he says at that time it would be an exotic movement. What is exotic movement? ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है. Exotic movement means the complete suspension of all worldly activity would be exotic, rare, and extraordinary movement, as everyone, when they will stop or pause together in sudden stillness, they will experience a sense of unity, bonding, togetherness, and universal brotherhood. Right? एंड इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो इस पोएम में आप हमेशा लिख सकते हो. राइट? इट विल गिव देम अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. कीपिंग क्वाइट का मतलब ही यही है. इंट्रोस्पेक्शन, अपनी आत्मा से बात करना, अपने अंदर दिल से बात करना. और हम अपने दिल से कभी झूठ नहीं बोलते. ठीक है? राइट? नाउ ही सेज एक्सोटिक मूवमेंट क्या मतलब? जब हम पॉज करेंगे तो उससे क्या होगा? हमें सेंस ऑफ यूनिटी आएगी, हम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा की फीलिंग भी आप में आएगी. विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. मीन्स विदाउट रश, विदाउट इंजन मीन्स व्हीकल्स भी रुक जाएंगी, मशीन्स भी रुक जाएंगी, chaos, noise, mad race for success will come to a standstill. Life will slow down and nature will be allowed to breathe. आपने देखा होगा कोविड टाइम में जब सारी गाड़ियां बंद हो गई, सड़कें सुनसान हो गई, क्या हुआ था? पक्षी, मोर देखने को मिले, कितने सारे बर्ड्स हमने देखे. राइट? और हमने खुद बैठ के, जब कोई कुछ नहीं कर रहे थे, हमने इंट्रोस्पेक्शन किया कि लाइफ का कुछ पता नहीं है, कभी भी डेथ हो सकती है. सो व्हाई वी आर रनिंग अ रैट रेस? Why we are running after the materialistic things? In the end, it is only the basic things that are important. Right? So वो चीजें without rush, without engine का मतलब यही है कि we stop and we stand. Everything should come to standstill. We should not run for mad race. Right? Then he says, then we would all be together. Means in this rare and unusual moment of shared stillness or silence, all human beings will feel connected as one, and difference will disappear, and a deep sense of oneness will prevail. Okay? हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे. आपने कोरोना टाइम में भी देखा होगा, हमें एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के लिए एम्पैथी होना, ये सब चीजें हमारे अंदर आई थी. Isn't it? So that is what happens. वो तभी होता है जब हम अपनी रैट रेस को पॉज करते हैं, हम थोड़ी देर रुकते हैं कुछ सोचने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए. और बाकी आप पिक्चर्स को भी याद कर सकते हो. ये विजुअल्स मैंने इसीलिए दिए हैं. बहुत सारे लोग बैठे हैं तो आपको याद होना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ब्रदरहुड फीलिंग है, बॉन्डिंग टुगेदर है. राइट? कैसे है? नॉट मूव सो मच, you introspect. Right? Take the screenshot of this page also. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hand. Those who prepare green wars, war with gas, war with fire, victory with no survivors. He said, जब हम pause करते हैं तो जैसे fisherman है, वो भी whales को he will not kill. Right? They will stop harming the innocent whales. And they will also think about their action कि हम इन बेचारों को, बेगुनाह जीवों को क्यों मार रहे हैं? सिर्फ अपनी हंगर सेटिस्फाई करने के लिए. राइट? एंड वो अपने they will ponder on their actions. Fisherman here symbolizes capitalist, oppressors, and people in power. Whales symbolizes the weak innocent victims or the common man. So जो पावरफुल मैन है वो भी इंट्रोस्पेक्शन के टाइम पे सोचेंगे कि हम गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को, मजदूरों को, why we give so much oppression to them. Okay? So
This will give them introspection. The man gathering salt would look at his hurt hand. जो man he is gathering salt, he will also pause and realize the physical pain and sacrifices he has made for material comfort. वो salt क्यों collect कर रहा है? पैसा कमाने के लिए. और उस दौरान क्या हो रहा है? उसके हाथ जो हैं गल रहे हैं. Oh, he is hurting his hands. But at the time of pause, keeping quiet, he will realize that he is running after all irrelevant material comforts. Right? Hurt hand symbolizes human beings who ignore the pain they cause to themselves while chasing success and comforts. Those who prepare green wars, यहाँ पे वो लोग जो green wars means it's a war against environment को destroy करते हैं. Wars with gas refers to chemical wars. War with fire refers to war with arms and ammunitions. Victory with no survivors. क्या होगा जब इतनी wars, इतनी लड़ाई, इतने जंग होंगे तो क्या होगा? There will be victory, but it will be meaningless. Why? There will be no one left to enjoy it. War, what does it do? It only brings destruction, sorrow and suffering. So victory with no survivors आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. Fisherman in the cold sea would not harm whales. इसको explanation आ सकती है. Man gathering salt would look at his hurt hand. ये भी ये explanation के लिए आते हैं. Green wars भी आती हैं. War with gas क्या होता है? War with fire क्या होता है? Victory with no survivor का meaning समझाओ. Put on clean clothes. Clean clothes symbolizes purity of heart, change of attitude and a fresh beginning आफ्टर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. जब ये सब लोग पॉज करेंगे, इनको अपने इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, इनको समझ आएगा कि कहाँ पर हम गलत हैं. सो दे विल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स मीन्स दे विल प्योरीफाई देयर हार्ट, राइट, एंड चेंज विल कम इन देयर एटीट्यूड एंड दे विल नो लॉन्गर बी सेल्फिश, greedy, cunning. All these bad qualities will be removed from them. Humanity will come to them. Empathy will come to them, right? Walk about with their brothers in the shade doing nothing. What does that mean? This symbolizes universal brotherhood. They will walk with their brothers. भाईचारे का संदेश है वो, right? Universal brotherhood, peace and harmony. The poet urges people to pause, reflect on their actions, right? Heal their wounds and return with their better understanding of life, not remain inactive forever. Okay? Take the screenshot of this also. Explanation, everything is given to you. You keep on revising these notes and you can answer any question. You will become so confident. I have made everything easy for you. Visuals also I have given to you. White clothes, white men walking together with their arms on their shoulders, brotherhood symbol, right? What I want should not be confused with total inactivity. Now the poet wants to say ki I don't want you to confuse. He doesn't say that you should stop all the work. School जाना बंद कर दो, office जाना बंद कर दो, वो ये नहीं कह रहे हैं. He says what I want should not be confused with total inactivity. He says total inactivity I am not supporting. He thinks life is a dynamic process. He only asks us to pause for self-introspection and return with a better understanding of life. Otherwise, बाकी काम हमें जिंदगी के करते रहना है. Daily activities we'll keep on doing. But pause होना चाहिए लाइफ में. मैंने बोला कि आप नाइट में भी अगर 10 minutes भी पॉज करोगे, आप अपने गोल्स क्या हैं, कल सुबह मुझे क्या करना है, अपने टारगेट्स देखोगे. So that is called introspection. Okay. And then he says, life is with total inactivity. समझ आ गया ना? Inactivity पूरी नहीं चाह रहे हैं वो. Life is what it is about. I want no truck with death. No truck with death means, he says, he rejects death and lifelessness. He wants people to value life and use moments of silence for reflection, not for escaping from life. टोटल इनएक्टिविटी भी नहीं करनी है कि आप घर सारे काम छोड़ के बस इंट्रोस्पेक्शन करने लग जाओ. उससे क्या हो जाएगा? वी विल बी डेड. जब हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, कोई ग्रो नहीं कर रहे, प्रोग्रेस नहीं कर रहे, व्हाट विल हैपन? वी विल बी डेड, राइट? सो ही वांट नो ट्रक विद डेथ, राइट? एंड ही सेज इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड
a huge silence may interrupt this sadness. Right? If we were not so single-minded, means human beings are often, we are self-centered and materialistic. But what does the poet say? He says, you rise above your selfishness and develop love, compassion, and understanding for others. And he says, huge silence may interrupt this sadness, means a moment of complete silence can break the cycle of violence, hatred, and suffering. Right? And it will give people an opportunity to reflect upon their action and bring positive change. So keeping quiet, introspection आपको क्या देगा? It will bring positive change of understanding human beings, understanding compassion, understanding your fellow beings, helping each other, all these qualities will come where the world will be like a heaven, right? And then he takes an example of the earth. Perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive. What does he mean by that? He has taken earth as a symbol of regeneration. He says, earth teaches us that life never stops. Even in the moment of apparent stillness, nature silently prepares for a new beginning. जैसे phoenix bird होता है, it dies and then rises again from its ashes. We should also use moments of silence to reflect, regenerate ourselves, and return with better understanding of life and the world around us. Okay? So ये सारी जो अंडरलाइन हो रखी हैं आपकी लाइंस, ये इनके बारे में ही पूछते हैं बोर्ड में. आपको ये समझ आ जाए अगर, if you understand and you learn them, I think you will be able to answer any question. And if you use this language, I think you can score 5 out of 5. Okay? Let's see the last thing, keeping quiet, poetic devices. Alliteration is there. Sudden strangeness, hurt hands, her, HH, clean clothes. Repetition, without rush, without engine, without, war. That is repetition. Symbolism, so many words. Completeness of time, fisherman, whales, hurt hands, green wars, clean clothes, earth. Personification, perhaps the earth can teach us. Human quality दिया हुआ है. Metaphor is implied, meaning the earth has a teacher of life, stillness, renewal, and hope. Now let's see what is the theme of the poem, Keeping Quiet. It highlights the need for a moment of silence and self-introspection in our busy, materialistic, violent life. It urges us to pause, reflect on our action, and return with love, understanding, and harmony toward all human being and nature. So पहले हमें समझना है, उसके बाद जब हमें वापस अपने फेलो बींग्स को लव करना है, उनको समझना है और हार्मोनियस एनवायरनमेंट में रहना है, शांतिपूर्वक सब कुछ. मैसेज इस पोएम का ये है कि हमें अपनी हेक्टिक लाइफ से कुछ टाइम निकाल के साइलेंस में रहना है. we can heal our wounds and violence and bring peace. We should learn to respect life, value nature, and build a world of brotherhood, compassion, and harmony. Right? तो white pigeon को हमेशा याद रखना. Peace. Title justification देखो. The title Keeping Quiet is very apt. The poet asks us to keep quiet for a while in order to reflect on our action. This silence is not inactive, but a pause that brings understanding, healing, and positive change. Okay? So I hope I have made myself clear to you. So students, this was the complete revision of Keeping Quiet. I hope these notes will help you to understand the poem clearly and make your revision easy and effective. Revise these sheets regularly and you will be able to answer the questions with confidence in your CBSE examination. If you found this video useful, share, like and subscribe to Chalk, Chai and Zindagi. Thank you for watching and I will meet you in the next video. Till then, happy learning.